Hi everybody. Today I have a very special guest, a Kamal Insan, Arzish Azam. Perfect. So first of all, thank you so much for inviting me, and also congratulations for starting this new amazing podcast. I've been following your journey even Thanks. before this podcast, obviously, but this Yes. podcast is an amazing effort, right? And I love it, and Thanks. and it's an honor for me to be here, like honestly. And yeah, so let's get into it. Yes, you are one of my, I would say, oldest friends. uh, Yeah. Someone, there are very few friends I feel now who know you before your professional success and the professional person that we become, right? So Yeah. the Yeah. like and those friends are obviously, that's a different kind of friendship. True. So we met at the Founder Institute. It was the first cohort in Islamabad, and Correct. and I joined it to learn kind of how to build a startup. Mm-hmm. I don't know if I learned it right or not, but at least I tried building different things and some of them worked out. Yeah. But I feel the Founder Institute was an amazing experience. मतलब वहाँ Mm-hmm. जो mentors थे, जो network था, जो understanding थी fundamentals की, वो Correct. बहुत जरूरी था क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी तो कभी गया नहीं एफएससी के लिए, Mm-hmm. और उसके बाद वहां पर आ गया शौक में, और कभी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गया। तो मेरी लर्निंग जिंदगी की सारी जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से ही है। और उसमें जो एक इंस्टीट्यूशन का रोल फाउंडर इंस्टीट्यूट ने पे किया, आई थिंक वो बड़ा मेरी लाइफ पे उसका बड़ा इम्पैक्ट है, Mm-hmm. स्पेशली उन मेंटोर्स का, उन दोस्तों का भी बड़ा रियलाइजेशन है कि कैसे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मैं बताऊं कि मैं फाउंडर इंस्टीट्यूट में पहुंचा कैसे था, क्योंकि वो ज्यादा मजे की Please, स्टोरी है। please. Yes. तो मुझे स्टार्टअप का जरा शौक हुआ, एफएससी की थी, थोड़ा सा मैं Mm-hmm. ऑनलाइन ई कॉमर्स पे काम करता था, थोड़े बहुत पैसे बच जाते थे, तो मुझे था कि Mm-hmm. अच्छा यार ये काम चलता तो है। फिर मैंने देखा कि मोनिस रहमान का एक सेशन हो रहा है इस्लामाबाद में, जो रोजी के फाउंडर हैं, रोजी डॉट Mm-hmm. पी के। और उस सेशन के लिए मैंने रजिस्टर कर लिया, और वो फाउंडर इंस्टीट्यूट का सेशन था। तो वो फाउंडर इंस्टीट्यूट का सेशन था, इंट्रोडक्टरी, कोई प्रोफेशनल इवेंट था इस तरह। और मैं यूसुफ से मिला, तो मैंने उनसे बस इंट्रो कराने के लिए बताया कि सर ये मेरी एज है, पता नहीं 18-19 साल जो भी थी उस 18 टाइम, मुझे याद है। और मैं ये कर रहा हूँ। तो Yeah. उनकी स्टेटमेंट ना मुझे बहुत कमाल लगी। तो उन्होंने बिल्कुल एक स्ट्रेट फेस से कहा कि देखिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है आपकी क्या एज है, अगर Mm-hmm. आप काम करना चाहते हैं तो आप आएं और करें, हम आपको मौका देंगे। और वो इतनी इनकरेजिंग स्टेटमेंट थी ना, मतलब देयर वाज नो बुलशिट इन दैट स्टेटमेंट, देयर वाज Correct. स्ट्रेट अप कि यार अच्छा, लाइक वी डोंट केयर, राइट, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप Yeah. एंड वी आर हियर, राइट, Mm-hmm. नो मैटर हु यू आर, नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज, व्हाट योर क्रेडेंशियल्स आर। तो मैंने उसी दिन जाके जो है ना फॉर्म शॉर्म फिल किया, अप्लाई किया, फीस भरी, और मैंने ज्वाइन कर लिया। Huh. Or by the time that I graduated, and even as part of the cohort, I think there were no other young people. Sorry to say, but when I graduated, I turned out to be the youngest founder student graduate Yes. around the world, like around like Yes. 2,000 people, and that was out of, I would say, sheer luck, right? It's just showing up somewhere, just pursuing something, कि यार चलो ट्राई करके देखते हैं। Mm-hmm. और वो पूरी जिंदगी की जर्नी इसी पे चल रही है, डिफरेंट चीजें आती हैं, मैं कुछ Correct. ना कुछ ट्राई करता हूँ, कभी कभी वो चीजें चल जाती हैं, ज्यादातर नहीं चलती। लेकिन लोगों को नजर वही आता है जो चल जाता है ना, उन्हें लगता हाँ. है कि अच्छा ये हर चीज ही सक्सेसफुल है। बट वो उसके पीछे जितने फेलियर्स होते हैं, उन सब का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू Correct. लर्न एंड टू बिल्ड योर सेल्फ एंड वट एवर इम्पैक्ट यूर बिल्डिंग। तो ये Yeah, थोड़ी it's such an शुरुआत। important part. It's such an important part, ये जो अभी जो मेंशन किया है ना कि फेलियर्स भी होते हैं, वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। तो या if we can talk more about that, Ardish, as well. I know हम लोग सीधा अभी फेलियर्स में ही छलांग मारे, although I had other questions in my हम later. सीधा छलांग मारते हैं, ज्यादा मजे की कॉन्वर्सेशन है। Done. Okay, तो done. जैसा कि तुम जानती हो, क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त भी हो, तो पिछले 5-6 सालों में बहुत से काम मैंने या मेरी कंपनी जो इजाद लैब्स हैं, हमने डिफरेंट इनिशिएटिव्स में किए हैं। और Mhm. हमें लगता है कि पब्लिकली ज्यादातर अच्छे ही थे, मतलब अगर गलतियां होती भी हैं तो वो इतनी नजर नहीं आती, हम सीखते हैं, हम ग्रो करते हैं। लेकिन लास्ट ईयर जो है हमने बड़ा एक पब्लिक सा जो है ना, थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक फेलियर Mhm. किया था, Yeah. which was the first Futurefest, right? So we did it way too big. There were too many Yeah. circumstances that went against us, put the politics, the heat wave, the doing it in a public park, but Mhm. the sheer scale of the event was way too big to handle, right? And I think somewhat maybe we underestimated the whatever, like the effort that was required. Mhm.
और वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, क्योंकि उससे पहले जो है ना सब कुछ वो अपवर्ड अपवर्ड चल रहा था। जब वो हुआ तो हर बंदे ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। तो हम्म। एकदम क्या होता है कि आप कुछ काम खराब कर देना तो लोग आपकी सारी हिस्ट्री भूल जाते हैं सही कामों की, और वो आपको सिर्फ आपके लास्ट काम पे जज करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार, ये आखिरी काम इसने सही नहीं किया, तो इसका मतलब ये लोग ही सही नहीं है, ये काम सही नहीं करते, ये तो बुरे लोग हैं। और बड़े लोगों ने ट्वीट्स भी की, बड़ा कुछ हुआ, जो हमारे मुल्क में कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, हमें एक्स्ट्रा मोहब्बत मिलती है हर बंदे से। लेकिन उसको हमने बड़ा दिल पे लिया, और हमने किसी का जवाब नहीं दिया, हमने किसी से नाराजगी नहीं रखी। हमने कहा कि इसका जवाब जो है हम इसको इम्प्रूव करके देंगे। हमने जो लेसन सीखना था हमने सीख लिया। बेशक ये पब्लिकली कुछ मसले सामने आ गए, और हमने फिर 7 महीने मेहनत की, फिर हम्म। फ्यूचर फेस्ट लाहौर में भी कराया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, it was, I feel that, even like a much bigger success than we even like ever planned or thought True. or envisioned, right? Mm-hmm. We generated around $200 million of investment and partnerships and MOUs in Pakistan by foreign That's a companies. really big thing for anybody It's a listening. big thing. It's a really, really Alhamdulillah. big thing, mashallah, mashallah, in Pakistan, yeah. And I think without a doubt, I'm not saying that as a friend right now, but genuinely as someone who has seen your work from the outside, who knows how you worked on all of these things, and you know the way that you give your heart and soul to everything, right? I can definitely say कि फ्यूचर फेस्ट इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है जो हर साल होती है, और ये एक आई थिंक 2 साल हुए हैं, सिर्फ 2 बार हुई है कॉन्फ्रेंस, राइट? हाँ, 7 महीने में 2 दफा किया हमने, कमाल यार, because कमाल। the first one was delayed 3 times, right? वाह। So बट अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट आई एम सेइंग इज के अगर शायद वो खराब ना होता या तो दूसरे वाली इतनी अच्छी ना होती। मतलब शायद पहले वाली अच्छी हो जाती, दूसरे वाली थोड़ी सी और अच्छी होती, लेकिन क्योंकि पहली थोड़ी सी हमसे खराब हो गई, तो राइट। हमने बहुत ज्यादा जो है ना डीप थिंकिंग की, रिवर्किंग की, अपने फंडामेंटल्स को क्वेश्चन किया कि राइट। हमें किस तरह करना है। और हमने फिर अपना जी जान लगा दिया, जिस तरह हर काम में लगाना चाहिए। करेक्ट। और ये वाला जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा हो गया। हमें था कि ये एक अच्छा इवेंट हो जाएगा, बहुत सी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, बहुत हम चीजें डिफरेंट कर रहे हैं, बड़ा एक ओपन इवेंट है, सबको इंक्लूड किया गया है। बहुत एक क्यूरेटर बनाया हमने लोगों को कि यार सारे लोग आए और वो अपनी थॉट्स, अपनी अपने पर्सपेक्टिव्स लेके आए इस इवेंट में, रेदर देन कि कोई एक बंदा चूज कर ले कि ये 20 स्पीकर हैं जो बताएंगे कि मुल्क का फ्यूचर क्या है। हमने कहा कि एग्जैक्टली। आप बताना, आप डिफरेंट इंडस्ट्री लीडर्स हैं, आप क्यूरेट करें इस चीज को। और ऐसे हर चीज को हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने सीखा। और आई फील के द वर्ल्ड agrees that it was a massive success, not just माशाल्लाह। as an event but as an activity that has helped pull Pakistan forward, right? ट्रू। Help open doors, make bridges. Even last week, a Saudi prince was in Islamabad and Lahore, His Royal Highness Prince Fahad Al Saud, and that was a follow-up activity of the Future Fest, right? That was announced at Future Fest and then now formally launched. And there's so much more that we are tracking, right? The things that are happening, and that is just a side effect or an outcome of being a catalyst, right? So you करेक्ट। create a platform, you create an incubator. For me, starting वो जो पिछली वाली स्टार्टिंग थी सारी, वहां से जब मेरा स्टार्टअप इतना अच्छा नहीं चला और मुझे लगा कि मुझे इवेंट्स कराने में मजा आता है, और फिर मैंने सोचा कि इवेंट्स में जो है एंड गोल क्या होता है, राइट? सो यू डू स्मॉल कम्युनिटी इवेंट्स एंड वी होस्टेड सो मेनी ऑफ देम. करेक्ट। The end goal was to create something like this, right? To create the flagship mega tech event of the country. Something like JITEX, something like Web Summit, something वाओ। like South by Southwest. But it has evolved from there, where we realize that for Pakistan the future is not just technology, right? It is also all this culture, the food, the human capital that we have in या। non-tech spaces, right? So tech is an enabler for Pakistan, for the world, for whatever. Why we called it Future Fest and not Tech Fest is because we realized that yes, tech may be enabling the future of Pakistan, but tech is not the only future of Pakistan, right? There's so much more that we want to promote, encourage, and we want the world to see कि यहाँ पर यार क्या कुछ हो रहा है. तो ये थोड़ा सा जो है ना हमारा फेलियर पे लेसन हो गया. Wow. But like bringing that lesson into what you do right now, Arzish, because I feel like ये जो तुमने अपने like title जो choose किया है ना, super connected, by all means you live it, you breathe it, you embody it, right? So अल्हम्दुलिल्लाह, I अल्हम्दुलिल्लाह. really want to understand कि
एज ए सुपर कनेक्टर, एज यू मेंशन राइट, कि इवेंट्स कराने में मजा आता था. एक पहले कराया, स्टार्टअप ग्राइंड से शुरुआत, एंड देन फाउंडर्स Yeah. इंस्टीट्यूट, एंड देन कम्स द रेस्ट ऑफ इट, एंड देन नाउ माशाल्लाह फ्यूचर फेस्ट ऑन अ मैसिव स्केल. So, as a Yeah. super connector, या फिर as someone who's acting as a bridge between Pakistan and the world outside, how has that shaped your experience and your perspective as a young 25-year-old, recently turned As a 26? young 25-year-old. Thank you so much. Thank you so much. When I was 19 and there were news that, there's this 19-year-old kid or Yeah, whatever, I felt very young. I still feel young, I feel के you मैंने are. देखिए हमारे मुल्क में 70% लोग जो हैं दे आर अंडर 30, राइट. Mm-hmm. दिस इज अ यंग नेशन. Why are the rulers of this country 50 plus, right? Why is the bureaucracy 50 plus, right? There is a fundamental disconnect between the people who run this country and the Mm-hmm. people who are this country, right? 70% is what this country is. And I feel I've done nothing special, right? Like, and the other young people who are, doing things, like we are doing nothing special. We are just in the right time, in the right place. Mm-hmm. बिकॉज हम young हैं, हमने टेक्नोलॉजी को, इस दौर को डिफरेंट तरह से एक्सपीरियंस किया है. Correct. हमारा पर्सपेक्टिव ही जमाने में डिफरेंट है. और Mm-hmm. अब शायद हमारा पर्सपेक्टिव जो है वो ज्यादा ट्यून इन करता है जो दुनिया में चल रहा है. शायद ये चीजें नेचुरली ज्यादा अलाइन करती हैं, जो हम इतने कोलैबोरेटिव चलते हैं, जो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं. ये सारी वैल्यूज जो है आप देखेंगे कि यंग लोगों में बड़ी कॉमन है. लेकिन Correct. शायद एक और जो जनरेशन चल रही है, और इसमें टेक्नोलॉजी का, ग्लोबलाइजेशन का बड़ा रोल है. मुझे लगता है कि पर्सनली मेरे लिए पर्सनल ग्रोथ हैज ऑलवेज बिन द key driver, right? It's not been I want to build $1 billion company. I got a chance to join a very big startup at that time in Pakistan, and then I left after 2 weeks, because मजा नहीं आ रहा था. और हमेशा हर चीज में मैं देखता हूँ कि ठीक है, मे बी दिस फाइनेंशियल इंसेंटिव, yes or no, but will this provide me an opportunity to grow, right? And this is me talking from a Mm-hmm. personal perspective. My Correct. company Yeah. makes its own decisions, right? But then always I try to do different things and new things, and something more that can help grow me and in turn grow whatever organization that I'm Mm-hmm. building as well. और ये जो सुपर कनेक्टर वाली सारी चीज है जो चल रही है, जो अब बड़ी बन गई है, शुरू से ये गोल था कि दिस इज Correct. द वे टू हेल्प कनेक्ट पीपल एंड दे ग्रो एंड यू ग्रो एंड एवरीवन ग्रोस, राइट. और इसके डिफरेंट तरीके हैं. फ्यूचर फेस्ट एक प्लेटफॉर्म है जो हमने बनाया है. एक तरीका है जो हम लोगों को बाहर लेके जाते हैं, इवेंट्स पे कनेक्ट कराते हैं. हम छोटे छोटे डिनर्स होस्ट कर लेते हैं. Mm-hmm. व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं. सब ये कनेक्ट करने के ही तरीके हैं. आप इमेजिन करें कि 30 साल पहले लोगों ने अगर 50 लोगों को कुछ बात कहनी होगी तो वो कैसे कहते होंगे. आज Yeah. हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और मैसेज कर देते हैं. तो दुनिया जो है वो बहुत आसान होती जा रही है. जिंदगी बड़ी आसान हो गई है. हमें उस रियलाइज नहीं हो रहा, बिकॉज वी गेट यूज टू इट सो फास्ट, राइट. वी गेट Correct. यूज टू इट सो फास्ट कि यू कैन नाउ बिकम एन इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया, हैव like 50 million people and influence literally the way life is in a region, in a country, in a certain age group. This is all being enabled by technology. और मुझे इसी में मजा आता है कि मैं नई नई चीजें करता रहूं, Mm-hmm. एक्सपेरिमेंट करता रहूं. और थोड़ी सी जो शायद मुझे लगता है कि एक पर्पस जिस पे मैं बड़ा अलाइंड हूँ, कि कमिंग फ्रॉम दिस कंट्री एंड हैविंग all these like opportunities to go outside, to meet people, to travel so many countries at such a young age, having no formal degree, no credentials, no जो है ना वो other privileged stuff, I would say more privileged stuff. Like my father is a poet and he was a journalist. So all these opportunities, why are they not for every other Pakistani, right? Why is it so difficult for us just because we're born in a piece of land, right? Mm-hmm. Like ये थोड़ी डिफाइन करता है कि हमें ट्रीटमेंट कैसे मिलना चाहिए, कि हमारे Correct. पासपोर्ट का कलर क्या है. तो ये चीजें दुनिया में फंडामेंटली इनकरेक्ट हैं. और अगर थोड़ा सा हमें मौका मिल रहा है तो हम इसको इन्फ्लुएंस करेंगे. और चाहे जितना मर्जी वक्त लग जाए, कुछ ना कुछ तब्दीली तो आएगी अगर हम एफर्ट कर लें. और मैं जो पर्सनल कैपेसिटी में एफर्ट कर सकता हूँ, बाय प्रमोटिंग द टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, Mm-hmm. बाय द सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, by inviting more and more people to Pakistan, right? The Yes. more individuals you bring here, you change their perspectives, right? Like हमें नजर आता है ना कि पाकिस्तान कितना औसम है. हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, Mm-hmm. और
डाइवर्सिटी भी है, कल्चर भी है। हर शहर में जाएं तो एक पूरी सिविलाइजेशन है, करेक्ट। 22 करोड़ लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। मतलब ये एक पूरा एक पूरा निजाम इधर चल रहा है, राइट। लेकिन जो बाहर बैठा है उसे ये सब कुछ नजर नहीं आता, उसे सिर्फ न्यूज नजर आती है, उसे और बैड न्यूज ही नजर आती है। और जो कभी आया नहीं होता पाकिस्तान, उससे तो ये लगता है कि यहाँ सहरा है और यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, यहाँ सड़कें भी नहीं है। अब हम उन्हें क्या बताएं कि इस्लामाबाद एक डेवलप सिटी है पूरी, आप आके देखें तो सही। तो कुछ चीजें जब तक हम उन्हें दिखाएंगे नहीं, वो बदलेंगे नहीं। और दूसरा जो हमें लगा कि बहुत अच्छी एक चीज है कि जब हम खुद बाहर जाते हैं, जब आप बाहर जाते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स बाहर हैं, जब करेक्ट। वो लोगों से मिलते हैं और वो बताते हैं, अच्छा यार, आई एम सनिया, आई वर्क हियर, आई डू दिस, I am from Pakistan, right? करेक्ट। That shapes the perspective of Pakistan, right? Like एब्सोल्युटली या। us meeting people and them realizing, okay, there are all these smart people from Pakistan. You go to Silicon Valley and the perspective of Pakistan is very, very different, right? In Dubai, in Riyadh, it's very different because हमने वहाँ लेबर भेजी है, जो कि उस लेबर की गलती नहीं है, पॉलिसीज की गलती है। बट अगर अमेरिका में हम ये कर रहे हैं, तो हम हर जगह क्यों नहीं कर रहे? हम अपने स्मार्ट लोग क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर रहे, चाहे हम वो फिजिकली करें या ऑनलाइन करें? मुझे थोड़ा ये लगता है कि इस मुल्क में बैठे जो लोग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 50,000 की सैलरी पे इतना ज्यादा काम करते हैं, अगर उनके इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, तो उन्हें इस सवाल पूछना चाहिए कि क्या कोई डिजिटल स्किल है जो वो सीख के ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, जो वो रिमोट जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग या। कर सकते हैं। करेक्ट। कोई तो स्किल होगा जो वो कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बंदा कॉमर्स पढ़ा हुआ है तो शायद वो डेटा एनालिस्ट बन जाए। अगर किसी की मैथ अच्छी है तो वो अकाउंटेंट बन के ऑनलाइन काम कर सकता है। मतलब अब तो ज्यादा टेक्निकल भी जाने की जरूरत नहीं है। वही। अब हमें जो है ना वो फुल स्टैक डेवलपर बनने की जरूरत नहीं है। अभी इतने नॉन टेक्निकल रोल्स आ गए हैं, और स्पेशली जो रिमोट जॉब्स का कल्चर है, उसमें आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाए 1, 2, 3, 4 हज़ार डॉलर पे, इवन $500 पे भी, तो वो पाकिस्तान की जॉब से तो बहुत बेहतर है। करेक्ट। तो फॉर अस द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ लिविंग इन साइड पाकिस्तान इज टू be part of the knowledge economy, to be doing something that earns dollars, right? For them, for this country, whatever, like they don't have to think about the country, like they just think of themselves, and it makes more sense that you do something that helps you earn dollars, right? और इसका मुल्क को वैसे ही फायदा हो जाएगा। तो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि ये इनकरेज करें, यूथ को ये चाहिए कि एक सेंसिबल डिसीजन लें कि डॉलर कहाँ से आता है। और दूसरा ये कि थोड़ी सी रिसर्च खुद करें, हर किसी के पीछे ना लग जाए। मतलब जाएं ऑनलाइन, सारा नॉलेज पड़ा ही हुआ है ना। आपको 50 साल पहले लाइब्रेरी में जाके किताब ढूंढनी पड़ती थी कि अच्छा, अगर हमने जो है ना ई कॉमर्स करनी है, तब तो होगी भी नहीं, तो वो किस किताब में लिखा है, कैसे होती है। करेक्ट। आज तो सब कुछ यूट्यूब पे है। मतलब 2 सर्चेस करने से भी हम डरते हैं, 2 दिन की रिसर्च भी नहीं हम ऑनलाइन कर सकते। हम बस चाहते हैं अच्छा कोई आया है जिसने को कोर्स बनाया है तो मैं यही करूंगा। भाई उसने भी तो ऑनलाइन सीख के ही कोर्स बनाया है ना। तो करेक्ट। आप अपनी एफर्ट क्यों नहीं करते? तो थोड़ी सी ये जो हमारी लेजीनेस है, that is like a counterproductive, right? We need to have a more hard working culture कि ठीक है यार, let us go hustle, figure ways out। और ये हम डेली लाइफ में रोज कर रहे हैं। अगर आप देखें कि पाकिस्तान में कितनी रिजिलियंस है, कितनी मुश्किल जिंदगी है। आपको जो है ना वो ड्राइविंग लाइसेंस से लेके कोई काम जो है आपका सीधे तरीके से नहीं होता, आपको हसल करना पड़ता है। तो आप फिजिकल लाइफ में हसल कर लेते हैं, लेकिन आप मोबाइल पे नहीं करेंगे जहाँ सब कुछ सीधा सीधा। तो ये थोड़ा सा हमारा मैसेज भी है ये कि मेंटालिटी वाला वो एक चाहिए ये शिफ्ट। मेंटेलिटी वाला इशू। लेकिन मेरा पता है एक पॉइंट था दैट आई रियली वांट टू मेंशन हियर व्हेन यू टॉक्ड अबाउट द फैक्ट दैट leaders are taking Pakistani startup founders to international spaces, right? And then bringing international investors to Pakistan. Again, a shift of perspective, right? That you've been enabling, mashallah, so far. And I have to share one experience that I got a chance to live and experience myself because of you. When we were a part of the Norway, Oslo, Walaju, I ओ think या द रीसेंट वन। Oslo Innovation Week, right? या अभी अभी। Yes. Oh my हाँ। God. Yaar, matlab, as an expat myself, I would say that I did not know that Pakistani expats in Norway, right? They have carved a niche of themselves. They've carved, mashallah, such amazing success stories that I wasn't aware of, right? But through your channel, through the events that we were a part of, I got to experience that. मतलब मैंने ऐसा कोई इवेंट नहीं देखा। यूरोप में हम बैठे हुए, ऑस्लो इनोवेशन वीक चल रहा है,
and Pakistani startups and Pakistani founders को shout outs मिल रहे हैं, and I'm like यार at least एक like उनका जो official dinner था उस पे अगर पाकिस्तान को माशाल्लाह इतना amazingly recognize किया जा रहा है at a very international platform जहाँ पे आपके international VCs, founders, different मतलब walks of life, everybody is there. And a country like Pakistan is, mashallah, getting that recognition. I was amazed, but in the best way possible. And for me, it was a really eye-opening experience as well. So I think what you're doing, mashallah, does enable people to experience the other side and also take that experience and learning back to, wherever they come from. So thank you for that. Actually, मेरा सवाल वही सवाल है जो मेरे से सवाल किया जाता है. You talked about the youth of Pakistan, and you talked about how to, acquire that skill set, which can make you a very credible employee for international organizations, right? Where you can earn, mashallah, like a higher salary and like on par with the international job market, basically. So I think मुझे अभी ये पूछना है आपसे कि you are someone who is surrounded by people who are working with international companies. I know people as well, and I think this is more sought after now in young adults in Pakistan right after they graduate, right? कि degree मिली, and think normally degree के बीच में ही लोग, because आपको अगर imagine अगर international आपको मिल रही है CS customer support की नौकरी, right? It's going to definitely pay you more than a lot of jobs inside Pakistan, basically. And आपको डिग्री की भी जरूरत नहीं है, आप अपना पढ़ भी रहे हो, अपना काम भी कर रहे हो, आप पैसे भी कमा रहे हो. By the time you graduate, you at least have some sort of skill set and then progress further on in your career. So I just want to understand कि क्या options हैं इस वक्त for kids who are graduating in Pakistan, studying in Pakistan, working in Pakistan. And then on the contrary, I also want to understand that how does this impact the startups in Pakistan? कि for example, अगर हमारी labor, हमारा जो human capital है, if it's only going after jobs, of course with a very fair reason कि यार मुझे सैलरी वहाँ बेहतर मिल रही है, right? तो मैं क्यों खामखा अपनी पाकिस्तान में कोई नौकरी ढूंढूं जहाँ पे मुझे सैलरी कम मिलेगी? But then that of course affects the businesses and the startups in Pakistan, right? So I want to understand कि मतलब किधर हम लोग एक balance strike करें, and how does this affect both मतलब mindset जो हम लोग का है for young adults and for startups? तो बहुत बहुत अच्छा सवाल है, आप बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं, पहले तो शुक्रिया आपका. और देखिए, द इशू इज कि हम कितनी देर से IBM, फेसबुक, ऑरेकल, गूगल को पैसे पे करें इस मुल्क से. हम कर रहे हैं, सर्विसेज सारी ग्लोबल चलती हैं और हम उन्हें डॉलर पे करते हैं. Yep. और डॉलर कमाते नहीं है. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर एक लोकल इकोनॉमी अच्छी बिल्ड की होती जिसमें डॉलर बाहर से आते, तो हम बिल्कुल कहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान में कि बहुत काम उस तरह हो सकता है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी फंडामेंटली फ्लॉड है. हमारे 10 मिलियन लोग इस मुल्क से बाहर हैं, जो कि आप लोग एक्सपर्ट्स हैं. आप 24 बिलियन डॉलर भेजते हैं और हमारे 220 मिलियन लोग इधर हैं. और वो कितने पैसे कमाते हैं, क्या इकोनॉमी चला रहे हैं? तो 10 मिलियन और बाहर भेज देने चाहिए हमें तो इस मैथ पे. लेकिन अगर वही टारगेट हम 5 लाख लोगों से अचीव कर सकें तो वाई नॉट, राइट? अभी most important goal should be for Pakistan as a country to bring in more dollars, right? And for individuals, it should be to earn money in dollars, which saves them from inflation, helps them earn more money, helps pump the economy as well, right? So मुल्क का भी काम हो जाएगा, इंडिविजुअली भी बेहतर है. तो सबसे पहले हमें वो करना चाहिए, राइट? सबसे पहले हम फिगर आउट करें कि वो चाहे कस्टमर सपोर्ट है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग है, चाहे लाइक सिविल इंजीनियर्स हैं जो यहाँ बैठे हैं अमेरिका की कंपनी के लिए सिविल एस्टिमेशंस करते हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. इस पे हम एक्चुअली एक रिसर्च करें, हम वो पब्लिश भी करेंगे कि दीज आर लाइक सम अपॉर्चुनिटीज दैट वी फिगर्ड आउट के पाकिस्तान में जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं वो ग्लोबली ये 4 काम कर सकते हैं. ये हम पूरी रिसर्च करके पब्लिक कर देंगे. हम कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी शुरू करें जो ऑब्वियसली IT कंपनीज, सर्विसेज कंपनीज, BPO कंपनी सारे यही काम करते हैं. हम एक जरा कंसोलिडेटेड एक कैंपेन रन करना चाहते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटीज हैं, प्लीज लुक एट दिस, राइट? और चाहे उसके कोई बंदा देख के कंपनी बना ले. अगर कोई देखे कि ठीक है यार अकाउंटेंट्स की इतनी डिमांड है, वो एक कंपनी बनाए, वो लोगों को अकाउंटेंट बना भी सिखाए और 200 अकाउंटेंट बैठा के आउटसोर्सिंग करे. हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोग अवेयर हों कि अपॉर्चुनिटी क्या है. और वो ऐसे प्लेटफॉर्म से भी होते हैं और थोड़ी सी हम रिसर्च पब्लिश करके होमवर्क भी करते हैं. देखिए, जो लोकल स्टार्टअप्स का भी इशू है कि डेफिनेटली पाकिस्तान एक बड़ी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है. हमें चाहिए कि जो स्टार्टअप्स यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करें वो लोकल ही हो. तो हमें बिल्ड इन पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान प्रमोट करना चाहिए. मुझे लगता है कि जो बाहर से स्टार्टअप्स आ रहे हैं वहाँ मार्केट कैप्चर करें. अगेन वो डॉलर बाहर जा रहा है,
पाकिस्तान की जो इकॉनमी वाला इशू है उसमें वो ऐड ही करता है। तो स्टार्टअप में, टेक्नोलॉजी में हमें हार्ड कोर लोकलाइजेशन प्रमोट करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा एक तो लोकल टैलेंट उससे डेवलप होता है, क्योंकि अगर लोकल इतनी नीड है कुछ काम करने की, पैसे कम भी मिले, स्किल तो मिल ही रहा है। करेक्ट। और दूसरा ये कि डॉलर बच रहे हैं मुल्क के, मतलब जो सोल्यूशन ये इंटरनेशनल कंपनीज आके लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स में दे रही हैं, अगर वो 4 टाइम्स लेस कॉस्ट में पाकिस्तान से बन जाता है और हमारे अपने बच्चे ट्रेन भी हो जाते हैं, तो हमें उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमें ये पहले ही करना चाहिए था, जब आईबीएम यहाँ पहली दफा आया था हमें उन्हें कहना चाहिए था कि आप क्योंकि इस मुल्क में आप काम कर रहे हैं तो आप कितने बंदे ट्रेन करेंगे बदले में। लेकिन जो पीछे हो गया, अब हम आगे से कुछ चीजें खुद कोशिश करते हैं कि सीधी कर लें। मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि हर बंदा पाकिस्तान से बैठे डॉलर कमा रहा हो, ये मुल्क बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा, फिर हम डॉलर में हर चीज खरीद लिया करेंगे। अगर हम जो है डोरिटोज अभी डॉलर के खरीदते हैं तो बाकी चीजें भी ले लेंगे, मतलब जो पेट फूड है बाहर से आती है, गाड़ियां सारी बाहर से आती हैं, तो हम ऑलरेडी एक इम्पोर्टेड इकोनॉमी चला रहे हैं। करेक्ट। तो अब हमें दूसरी साइड करने की जरूरत है, जो हमें पहले करनी चाहिए थी, कि हम कमाएं डॉलर में, हम खर्च डॉलर में करते हैं, कमाते हैं हम पीकेआर में, विच इज जस्ट इलॉजिकल, राइट। तो करेक्ट। अब हमें सारे काम छोड़ के ये करना है कि हमने डॉलर कमाने, individually, as companies, as businesses, and as a state, right? और अगर स्टेट इस पे नहीं कोई इनिशिएटिव लेती तो इंडिविजुअल्स लें। हमेशा जो कौम है वो अपनी हुकूमत को आगे लेके जाती है, हम में से लोग हुक्मरान बनते हैं। अगर हम कुछ करेंगे कलेक्टिवली तो हालात बेहतर भी हो जाएंगे। अगर हम इंतजार करते रहेंगे कि कोई आएगा और मुल्क बदलेगा, तो मेरे ख्याल से 70 साल तो इंतजार कर ही लिया है पहले। Arzish, I have one more question for you, which is linked to a recent conversation that I heard, mashallah, of you on a very international panel. And I think there were many other panelists as well. And I loved the fact that you started a conversation, which has now turned into a slogan, mashallah, that why not Pakistan? I think I've heard many questions. I have questioned it myself as well many times. And I'm sure that many people listening to this conversation have. Why Pakistan? Why should I stay in Pakistan? Why should I do this in Pakistan? Why should I start my own company in Pakistan? Things like that. But I love the perspective that you bring in, which is why not Pakistan? So I'm going to give it to you, and I would really want to know and understand your perspective because it's a very beautiful one, and it did, hit me somewhere inside. So yeah, I want to hear from you. Batao. Thank God it hit someone somewhere inside. It Thank did. God. It did. नहीं बहुत Yeah, so खूबसूरत बात बहुत खूबसूरत I बात की just I'll just give a backstory to this slogan. So when we Sure. did the last Future Fest, and because there were a lot of international participants, but Mhm. also like the 50-60,000 local, like the attendees, the students, everyone, right? So when we wanted to, like, when the event shows you the future and the opportunities and everything, it's very easy to see कि अच्छा यार ये तो बाहर होता है, यहाँ नहीं होता। तो हमने फिर वहां हर जगह यही ब्रांडिंग की थी कि why not Pakistan, right? And around why not Pakistan, we showed all the amazing work people are doing inside Pakistan, the companies, the products, the entities, the impact, right? And then that builds the story कि ये सब कुछ तो हो रहा है, so why not Pakistan, right? एंड फिर मुझे लीप सऊदी अरेबिया पे, जो कि अब दुनिया की सबसे बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस है, वहां मौका दिया गया कि वहां पर एक पैनल बनाया गया फ्यूचर फेस्ट के लिए ही, जिसमें 2 स्पीकर और थे जो कि सऊदी फाउंडर्स हैं जो फ्यूचर फेस्ट पे आए थे। एक उसमें से यूनिकॉर्न फाउंडर है, और वो पूरा कॉन्वर्सेशन इसी के अराउंड थी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है और क्या अपॉर्चुनिटी। और वहाँ हमारे क्योंकि दिल से भी थोड़ा निकलता है, लेकिन हमने लॉजिकली भी इसको जस्टिफाई कर लिया हुआ है कि व्हाई नॉट पाकिस्तान, राइट। Right. और द पॉइंट इज कि इट्स अ ब्यूटिफुल कंट्री, वी हैव सो मेनी climates, cultures, the food, the social fabric, your family, your friends. So the people who live here, when you go outside, then you truly realize the amazing things that we have here, right? And True. the people from outside, once they come to Pakistan, they fall in love with Pakistan, right? So there is something, right? कि Correct. जो भी इन्फ्लुएंसर आता है वो कहता है यार कमाल मुल्क है, क्योंकि Correct. वाकई कमाल है। आप जाएं दुबई में, आप दोपहर में वहां बाहर बैठ के दिखाएं, इट्स अ डेथ जोन। देव Mhm. लिटरली बिल्ड अ सिटी इन द डेथ जोन, राइट। वी लिव हिस्टोरिकली इन अ रीजन दैट वाज रिसोर्स रिच। तो बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट, this region, we have always been resource rich nature wise, so naturally it's a resource rich area. Yep. Now I feel it's a human resource rich area because we have so many people,
who are used to living in hard circumstances, who are hardworking people. Whereas you have the West, where are most of the people are used to living in not so hard circumstances. So you don't have a lot of hardworking people. So if you take these hardworking people and you plug them in the dollar economy, you will see what is happening in the US right now, right? Which is all the immigrants creating companies, Mm-hmm. becoming CEO. तो तो वो आपको नजर तो आ रहा है। तो आप इन लोगों को एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब ले जाते हैं, आप जब इस्टोनिया में, दुबई में, अमेरिका में ले जाते हैं, तो वो आउट परफॉर्म करते हैं, इसलिए Correct. नहीं कि मतलब उनमें कुछ बदल जाता है, इसलिए कि वो एनवायरनमेंट इनेबल करती है। हमारे Mm-hmm. यहाँ पर लोग हैं, नेचर है, रहने के लिए एक कमाल जगह है। ठीक है, कुछ मसले मसाइल हैं, वो हम मिलके आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करेंगे, क्योंकि बेहतर करने से ही होते हैं, गवर्नेंस के, सिक्योरिटी के। एब्सोल्युटली वी एग्री। बट जो अपॉर्चुनिटी है, दैट इज मच मच बिगर, राइट? दैट इज वर्थ द फाइट, एटलीस्ट फॉर मी, एटलीस्ट फॉर द पीपल हु आर फाइटिंग। Mm-hmm. Then you bring that environment, right? So once you bring that environment to this place, then the people here perform, right? Mm-hmm. And that is exactly what, for the very, like, at least IT companies are doing, at least software Yeah. companies and companies who have hired remote teams. What they're doing is कि उन्होंने कहा ठीक है यार, हमारा अमेरिका में कस्टमर है, हमारी टीम वहाँ है, हमने 200 बंदा पाकिस्तान में हायर करना है, तो हम यहाँ पाकिस्तान में कल्चर बिल्ड करेंगे, हम अपना Mm-hmm. ऑफिस बनाएंगे, हम इन्वायरमेंट लाएंगे। और वो ऑफिस इनेबल करता है एक आम डेवलपर को आम ना रहने में, उसको आउट परफॉर्म करने में, ग्रो करने में, क्योंकि अब वो पाकिस्तान की इकोनॉमी का पार्ट नहीं रहा, वो रहता पाकिस्तान में, लेकिन वो ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट है। सिलिकॉन वैली से भी जब कंपनी स्टार्ट होती है तो वो अमेरिकन कंपनी नहीं रहती ना, वो ग्लोबल Mm-hmm. कंपनी बन जाती है। तो Correct. हम तो एक ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं, और उसमें हमारा मैसेज ये है कि वाई नॉट पाकिस्तान, राइट? और कोई प्रूफ करके दिखाए कि मसले क्या है। इतना ज्यादा टैलेंट है, हर महीने 1.5 लाख बच्चे 18 साल के होते हैं, उन्हें कोई ट्रेनिंग करके सिखा दें, कुछ उन्हें वीडियो एडिटर बना दें, अकाउंटेंट बना दें, उन्हें कोई ऑनलाइन स्किल सिखा दें। हम तो इस अपॉर्चुनिटी को खुद लूज कर रहे हैं। हम लेबर एक्सपोर्ट करते हैं दुबई में और रियाद में और मुल्कों में। हम पता नहीं ड्राइवर भेज देते हैं, लोग जो है बार्सिलोना में सारी टैक्सियां पाकिस्तानी चलाते हैं। हाँ. ये Mm-hmm. तो थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की कि हमको स्किल लेबर भेजें, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है और तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब क्यों हम अगले 10 मिलियन लोगों को नॉलेज इकोनॉमी के लिए अपस्किल नहीं कर रहे? क्यों अभी भी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, ऑर्थो, वट एवर सारे प्रोड्यूस करें? हम इंपोर्ट करेंगे सब कुछ, कोई मसला नहीं। आप 10 मिलियन लोगों को नॉलेज इकोनॉमी में ले जाएं, उन्हें डॉलर कमाएं, हम डॉक्टर अमेरिका से बुलाया करेंगे। ठीक है, आप मतलब ये कोई सोच तो इतनी बड़ी करें। लिटरली आप 500,000 लोगों को अगर इस इकोनॉमी में ले आए, और वो $50,000 कमाते हैं साल का, जो कि इतने ज्यादा नहीं होते, मतलब अमेरिका के लिहाज से इट्स Mm-hmm. लाइक मे बी लाइक एंट्री लेवल और बिलो एंट्री लेवल, Basically, राइट? correct. स्पेशली Yeah. कंपनी Yeah. के लिए बिलो एंट्री लेवल। Mm-hmm. That is $24 billion. That is the same amount that 10 million diaspora who have spent their lives, gone out, struggled, built themselves, give to this country, right? So कहाँ 10 मिलियन लोगों का सेक्रीफाइस, और कहाँ 5 लाख लोगों की मेहनत, और वो भी Mm-hmm. लोकल इकोसिस्टम में। उन्हें अपने घरों में ही रहने दें, उन्हें कहीं इंस्टीट्यूट में बुलाएं, किसकी ने वीजे नहीं लगवाने, Yeah. फ्लाइटों पे नहीं जाना, नए शहरों में जाके नए दोस्त नहीं बनाने। तो ये दर्द भी जो है वो डायस्पोरा ही समझता है। तो अगर ये 5 लाख लोगों पे कोई पुश करेगा, तो वो शायद यहाँ से किसी को समझ ही ना आए कि हम बात क्या करें। Mm-hmm. लेकिन जो सारे लोग बाहर बैठे हैं, उन्होंने ये सेक्रीफाइस दिया हुआ है, वो समझ सकते हैं कि यार एटलीस्ट अगले 5 लाख को इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। क्यों ना हम उनको वहां ही ट्रेन कर दें, क्यों ना वहां ही उनको एक लैपटॉप दे के थोड़ा सिखा के तो 2-3-4 हज़ार डॉलर पर मंथ कमाने के काबिल बनाते हैं। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये गोल है। और यही सारा थीसिस है वाई नॉट पाकिस्तान का, कि दुनिया में इस टाइम ह्यूमन रिसोर्स की कमी है हर डोमेन में। Mm-hmm. अब ब्लॉकचेन के डेवलपर्स नहीं मिल रहे, हर रोज कोई नई चीज आ जाती है, आपको लोग नहीं मिलते। जिस चीज के लोग नहीं होते वो ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, लोग 100 100 200 200 डॉलर पर आवर क्यों लेते हैं? क्योंकि वो कम है। Correct. हम क्यों नहीं उस पे अपना रिसोर्स ट्रेन कर देते, उस पे अपस्किलिंग कर देते, उस पे प्रोड्यूस कर देते? हम क्यों आज भी कोशिश करें कि हम जराबें एक्सपोर्ट कर लें, और जो चीज़ हम अगेन बड़ी हार चुके हैं और मुल्कों के लिए। तो अब पाकिस्तान के पास जो लास्ट चांस है और जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो ह्यूमन रिसोर्स की है। और ह्यूमन Correct. रिसोर्स के फिजिकल एक्सपोर्ट की भी नहीं, यू जस्ट इनेबल देम टू बिकम पार्ट and earn dollars online sitting from here, and not
freelancing $2, $3, $5, you help them earn more dollars, right? So अब टेक्नोलॉजी में भी हमने क्या कहा कि हम जी थर्ड लार्जेस्ट फ्रीलांसिंग है, तो हमने टेक्नोलॉजी में भी लेबर वाला काम पकड़ लिया, जिस तरह हमने फिजिकल इंडस्ट्रीज में, जिस तरह इंडस्ट्रियल एरा में पकड़ा था कि Mm-hmm. दुबई में बाकी तो जाएं और बिजनेसेस बना लें, हमने अपने ड्राइवर भेज दिए सारे, हमने मजदूर भेज दिए। ठीक है, एटलीस्ट टेक्नोलॉजी में तो ये ज्यादती ना करें इस कॉम के साथ, टेक्नोलॉजी में उन्हें फ्रीलांसिंग तक तो ना रोकें। फ्रीलांसिंग पे जो आ गए हैं उन्हें आगे लेके जाएं, उन्हें रिमोट वर्कर्स बनाइए, उन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाएं, उन्हें एक्सपर्ट्स बनाएं उन डोमेन्स में, ताकि वो 20, 30, 50, $2 लाख कमाएं। मतलब दुनिया में जॉब्स मौजूद हैं जो आपको $500,000 $1 million भी पे करती हैं, जो लोकेशन बाउंड नहीं है, तो वो बंदा Mm-hmm. पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकता? और Correct. अगर वो कहीं और भी है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? हमारा अब टारगेट ये है। और थोड़ा सा जो इसमें मैं एक पर्सनल पार्ट ऐड करना चाहूंगा, तो मैंने पिछले दिनों ट्वीट की कि जी जो है ना, ये वक्त नहीं है मुल्क छोड़ के जाने का। इनफैक्ट यही वक्त है कि हम रुकें, हम लड़ें, हालात को बेहतर करें, इस मुल्क का फ्यूचर बनाएं। और बेशक आपको लगे कि शायद एक इंसान क्या कर सकता है, हो सकता है आपको ये लगे कि यार एक इंसान कोई चेंज नहीं ला सकता, बट एक्चुअल बात है कि एक इंसान ही चेंज ला सकता है। मतलब एक इंसान ही शुरू होता है और आप कलेक्टिव बनाते हैं और ह्यूमन सोसाइटी बनती है। और जब तक हम इंडिविजुअल गेन्स से आगे नहीं सोचेंगे, तो जिन जिन हुक्मरानों पे हम करप्ट होने का इल्जाम लगाते हैं वो भी तो ये कर रहे हैं ना, वो अपने इंडिविजुअल गेन का सोच रहे हैं। तो फिर Mm-hmm. हम उन खुद तो ये चाहते हैं कि हम इंडिविजुअली एक डिसीजन हमने लिया है कि हम बेहतर लाइफ गुजारें, लेकिन ये मुल्क बेहतर होना चाहिए। तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि अगेन डायस्पोरा ने किया है, क्योंकि आप बाहर जाके भी इस मुल्क की मदद कर रहे हैं। मतलब Mm-hmm. आप सेल्फिश होते हैं अगर आप बाहर जाके वो $10 बिलियन जो है $24 बिलियन ना भेजते, तो हमें तो डायस्पोरा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन जो लोग चले गए हैं या जो लोग जा रहे हैं, आई थिंक पर्सनली शायद मैं थोड़ा सा उस पर हर्ट हूँ, थोड़ा सैड हूँ, कि क्योंकि मेरे इतने दोस्त जो हैं वो बाहर मूव हो गए हैं ना। और यहाँ तो अब हम भी मूव हो जाए और हम कहें ठीक है जहाँ सारे हमारे दोस्त हैं हम वहां जाएं। Mm-hmm. लेकिन एक ये आपने अलग कर दिया ना लोगों को, तो अब एटलीस्ट हम थोड़ी कोशिश करें कि यार चाहे हमारी जिंदगी इस गोल में लग जाए, लेकिन एक ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इन अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर ना जाना पड़े, ये अपॉर्चुनिटीज हमारे पास चल कर आए। और उसमें अगर दो चार हमें सक्सेसेस मिली हैं जो शायद हिस्टोरिकली बड़ी सिग्निफिकेंट है अभी भी इस मुल्क में, Yes. मुझे ये लगता है कि $200 मिलियन अभी भी सिर्फ स्टार्ट है। ये जो $100 मिलियन हमने प्रिंस फाहद के साथ अनाउंस किया है, दिस इज ओनली द बिगिनिंग फॉर पाकिस्तान। देर इज सो मच मोर दैट विल बी डन, दैट कैन बी डन, and we will not do it alone. We will propagate this message, we will tell everyone to look at Pakistan, people living inside Pakistan, outside Pakistan, to Yeah. figure out and to see this opportunity। क्योंकि कोई भी करे, मुल्क का फायदा होना चाहिए। और Correct. इतनी बड़ी मार्केट है, इतने ज्यादा लोग हैं कि आप लाखों काम यहाँ से बैठे कर सकते हैं, और लोग कभी खत्म ही नहीं होंगे। और 2050 में जो है पाकिस्तान में जो है वो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री होगी दुनिया की बाय पॉपुलेशन। तो हमारी पॉपुलेशन तो इंक्रीज ही कर रही है, Mm-hmm. तो हमें पे कैपिटलाइज करना चाहिए। Correct. Wow. यार आई स्वेयर आई फील सो इंस्पायर्ड, मजाक के अलावा मैं मजाक भी नहीं कर रही, हाँ, तो मैं सिर्फ ठीक है। सुन रही हूँ, और आई एम जस्ट लाइक टेकिंग इन ऑल द इंफॉर्मेशन, माशाल्लाह. बट first off, congratulations, mashallah, on the $100 million that you brought in Pakistan. And it's a very, very big deal. And like you very rightly said, it is the start, not just, like a one-time thing, and many more to come, inshallah, in the future. Arzish, if you were to give a message to anyone outside living in Pakistan, whether expats, international investors, who want to invest in startups globally, what is your message for them to invest in startups in Pakistan? So I'll give two messages. One is for the investors who are looking at investing in startups in Pakistan. Yep. In the short term, yes, there are some issues going on in our financials. In the long run, this is a massive consumer economy. This is going to make it, right. And you've all seen the trend. So this is the market to go. And I feel that right now is the best time to invest, right? Mhm. Because like you give the amount of value you get in PKR for the dollars you invest is much higher right now. You can get cheaper people, you can build products, you can scale them cheaper. So right now people should be starting products all over, right? uh for the diaspora, for expats,
I think my message would be that, and I've met so many over the years, so many people who want to help Pakistan, who are struggling to understand how can they give back, right? And how can they give back just more than charity, right? Obviously, we see that all this charity, including like whatever hospitals are built by the diaspora support. Uh, I feel that we really need, as a country, your support to invest in the future of Pakistan, right? Yes, running a food bank feels really nice. People come in, they eat, but let us empower people to earn money and then help this nation. And as I said, you are well aware of the opportunities that exist outside. You are aware of the struggle that it has taken for you, for all the people to go to make it there. How can we work together, come together, and enable the next 10 million people to have the same opportunities without moving outside Pakistan, right? By tapping into your expertise, your network, and if you are making any financial support, I would urge you to look beyond just charities and helping people learn and grow and become employable and create a livelihood, right? And not just locally, but globally. I think that is the biggest contribution that the expat community can do. And it can just be a simple call to a young person, mentoring them, telling them that, do this, this, and this, because we can't do it alone. Like there are 10 million of you. That's like already a lot of people. So if we do it together, I think we can achieve the next 10 million goal much faster than just doing it alone. And we'll keep propagating this message to whatever next events we host in whatever countries, whether it's Norway, Silicon Valley, or online, right? This is the way to go. Amazing, mashallah. And your advice to the people looking for jobs, Arzish, right now in Pakistan People and looking for jobs. outside. Okay. So people looking for jobs, it's very, very simple. I've never done a job. Okay. So I don't know what I'm talking about, but because our community is of people who have built very big companies and very small companies and companies of all sorts. And even ourselves, we're always looking for people to hire, right? And there is this dilemma that at one side, you have all these people who are unemployed. And when you look out and try to hire, you don't find people, right? Mhm. So for people looking for jobs, my request would be to forget about degrees and certifications and education and focus on the skill. If you have the skill, if you have any skill, or if you have the willingness to learn any skill, I guarantee you that you will find a job. Go knock doors, walk into offices, go to companies. I would suggest the ones that earn dollars, so IT companies and other product companies, and just tell them that, we know how to do this thing and we want to join you and let us do this and prove ourselves to you. Mhm. Because the biggest issue is that people come in, you interview and you do all of this, and at the end of the day, they don't even know what to do. So Yeah. please, while you are looking for jobs, invest in yourself, go online, learn skills, learn one skill, become good at it, become better, become really good at it. And then that will be your entry point in the industry, right? We don't live in an age where you just do a degree, go outside, and people are like, please come in, right? Because our degrees are honestly like they're not up to par with the industry. So you focus on learning a skill, Mhm. especially if you are in the university, you have a lot of time, you can do online free boot camps, whatever. And for people outside Pakistan living for looking for jobs, that's a difficult question. I can't relate to it, but I feel that remote jobs is the way to go. Yeah, true. I just don't know how to find it and all. I'm sure there's Google and YouTube that can tell you much more about it. Mhm. But I feel that a lot of my friends do work remotely, and it enables you to grow. It enables you to move around, and it's more driven around what value you can provide to the company rather than, we're based in the city and we're looking for this kind of people, right? So the Mhm. new economy is remote, and this is what we should all be looking for. True. On our side, I think with this project, we are looking into, like focusing more on the remote jobs aspect as well, because there's so many people like around the world, Pakistan, outside Pakistan as well, who want to find a remote job, but they don't know where to or how to. So we're trying to, bridge that gap with as much information as we can possibly find online and then share it with the Amazing. people. Yeah.
amazing. एक No, और you सवाल, अर्जिश, okay? please. बताएं बताएं. Since this series is about investing at 25, ठीक है, and you mashallah Yeah, fit the bill completely. You are 25 years old, recently 26, and you yeah. invest, mashallah, you bring investors, invest in the talent in Pakistan, invest in yourself as well. But I really want to know, on a personal level, how do you invest your time, money, and energy as a 25/26-year-old? So number one, invest your time and energy in growing personally, learning skills, growing yourself. You are the product of your life. It's not your companies. Companies come and go. Mm-hmm. You are the product. Like True. your company can end tomorrow. What you gained out of it is the real product that you have, right? What you built, the impact that you created. But if you're also considering investing financially, I think as a 25-year-old who does invest around sometimes, I've learned that this is the time to build things. So you should invest in an active business that you are building, right? That is the best investment you can do. You invest in something that you're investing your soul and time and life in, because your life right now is the most valuable thing, right? You are 25, you can go grind, kill it, do hard work. You can't do this when you're 50 or 60 or Yeah. whatever, right? Maybe you can, but it's harder, right? Mm-hmm. So right now, आप जिस चीज को बनाने में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, आप अपना पैसा भी वहां लगाएं. Because otherwise it is illogical. You invest your money in real estate, but then your time you invest in building a startup where you're struggling. Your Mm. time is the most important thing, especially if you're 25. So wherever you invest your time, invest all your money there. Invest yourself in the active thing that you can build right now. And once you have built it, once you have made it by whatever age you do, then you invest in passive businesses, right? Then you Yep. invest in something else. Wow. Eight last sawal, Arzish. Yeah, Since yeah, you are heavily, you love poetry, right? I don't know if you yeah, write on your own as well. ये part अभी तक मैंने नहीं पूछा या मुझे नहीं पता as a friend also, but I really want to take this opportunity to ask you, what is the most recent, like any piece of poetry, whether you've written it yourself, whether you've read it somewhere, that had sort of, like a impact on you and you'd like to share? I will share it with you. I think it is Josh Maliha Badi, Mm-hmm. or I don't remember the whole thing, but yeah, I've opened it somewhere, so I will read it to you. Sure, go. So, one of the things about operating in Pakistan is that you get a lot of free challenges, I call them, because, a lot of people have free time and they Mm-hmm. spend this free time to give you challenges. So this is what I call free challenges, right? Right. What you need to realize is that this is all noise. In the long term, they don't matter. This doesn't matter. The work matters, your effort matters, and there's a system in this world. You will get rewarded, no worries. तो वो जो है ना, मैं एक नज़म उनकी सुन रहा था जिसकी जो जो की मैसेज है वो ये Mm-hmm. है कि पता नहीं, इट्स लिटिल आई वुड से, वो पुराने दौर की है. तो Mm-hmm. वो ये है कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से. Mm-hmm. जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है. Wow. And it I feel it applies to, thank you so much, to the current circumstances in the country as well. True. Yes, there is one choice for us to whine about it, to cry and be like, we can't make ends meet. And yes, that is a reality. But that is the very challenge that Allah has given us, that the nature has given us to solve this challenge. How you solve it? By, making an effort, starting something new, upskilling yourself, going out and voting. Like whatever is the way, that is for you to decide, right? But this very problem is the very opportunity. It is your calling to live, right? It is not the time to not live, right? This is the like, so ये थोड़ा सा मेरा उससे जो है. Wow. Kamal. No, but thank you so much, Arzish. I have been waiting for this episode for a very long time. I remember we've been talking months about this. कि यार करना है हाँ episode हाँ record बिल्कुल. करना है. But I'm so glad, mashallah, finally. And I'm really happy to have you on the show because you have been someone who supported my journey since the very beginning. So thank you so much.
And yeah, I really appreciate what you're doing for literally everyone around you, your family, your friends, startup founders, the Pakistani government, the Pakistan ecosystem in general, international investors. There's a lot that you're handling on a daily basis. So thank you for doing what you're doing. That's very kind of you, and you're doing an awesome job with this podcast and कोशिश कर रहे overall हैं other things in life as well. So हम. keep it up, and thank you so much for inviting it. So again, it's my honor that I've now got the opportunity to come here, and look forward to having more such discussions. For sure. Inshallah. Thank you. Thank you.